Assalamu alaikum students. Today we are going to solve the illustration number 1 of chapter number 3 general. Generalize the following transaction in the book of Narendra General Store. First date 2019 April 1. Narendra commenced business with cash rupees 80,000. What it means? Commence means start करना. नरेंद्र ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश 80,000 रुपीज़ से. फर्स्ट यहाँ पे ओनर्स का ओन इन्वेस्टमेंट है, राइट, एंड ओनर्स ओन इन्वेस्टमेंट कॉल्ड कैपिटल. सो कैश कम्स इन अ फॉर्म ऑफ कैपिटल. क्लियर. थर्ड, परचेज गुड्स फ्रॉम किरण ₹40,000 ऑन क्रेडिट. इट मीन्स हमने किरण से गुड्स परचेज किए, खरीदे, क्रेडिट मीन्स उधारी में. कितने का? 40,000 रुपीज़. सो व्हाट्स कम्स इन? गुड्स परचेज कम्स इन एंड हु गिव द गुड्स? किरण. 5, पेड रेंट ₹2,000. हम यहाँ पर रेंट पे कर रहे 2,000. कैश गोज आउट एंड रेंट इज आर एक्सपेंसेस. 10, sold goods to Mr. Vikas 5,500 on credit. हमने यहाँ पे क्या किया? विकास को गुड्स सेल किए 5,500 रुपीज़ का क्रेडिट में. सो हु इज़ द रिसीवर? विकास इज द रिसीवर, राइट, एंड व्हाट्स गोज आउट? सेल्स. नेक्स्ट 15, परचेज फर्नीचर ऑफ ₹30,000 एट 18% ऑफ GST. मीन्स हमने यहाँ पे फर्नीचर परचेज किए. कितने का परचेज किए फर्नीचर? 30,000 का, जिसके ऊपर हमने 18% GST दिए. सो 30,000 इंटू 18%, सो अमाउंट क्या आएगा? 5,400. सो फर्स्ट देर आर टू टाइप्स ऑफ GST कॉल्ड CGST एंड SGST. क्लियर है? ओके. Input CGST and SGST. SGST stand for State Goods and Service Tax and CGST stands for Central Goods and Service Tax. Next 18, received a bearer check of ₹25,000 from Mr. Vikas. Mr. Vikas से हमको bearer check मिला 25,000 रुपीज़ का. First, what we received? Bearer check. And who is the giver? Mr. Vikas. So listen students, there are two types of check. One is a bearer check and second one is a cross check. Bearer check means it is a type of cash. Means what? हम चेक लेंगे, बैंक में डिपॉजिट करेंगे और हमें ऑन द स्पॉट कैश मिलेगा. So bearer check is also considered as a hard cash. Okay. एंड सेकेंड वन इज़ अ क्रॉस चेक. अब ये क्रॉस चेक क्या होता है? दोज चेक आर डायरेक्टली पेड टू द पेइज अकाउंट कॉल्ड क्रॉस चेक. ऐसे चेक जो ऑन द स्पॉट एनकैशमेंट ना होते हुए जिसको भी हमने पे किए उसके अकाउंट में चले जाएंगे, इट्स कॉल्ड क्रॉस चेक. सो व्हाट वी रिसीव्ड इन द ट्रांजेक्शन? वी रिसीव्ड अ bearer check from Mr. Vikas. So we consider bearer check as our hard cash. Okay, so what we received? Cash. And who is the giver? Vikas. Next 21, paid to Kiran by check of Dena Bank ₹20,000. हम यहाँ पे क्या कर रहे? किरण को अमाउंट पे कर रहे थ्रू चेक. फ्रॉम विच बैंक? देना बैंक. ओके, सो हु इज द रिसीवर? Kiran is the receiver. And who is the giver? Dena Bank is the giver. And last, paid salary ₹5,000. Salary is our expenses and what goes out? Cash goes out. Clear? So through these transactions we have to pass the journal entries. अभी हमने जितने भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे देखे हैं, अभी हमको क्या करना है? उसकी जनरल एंट्री पास करनी है. सो दिस इज आवर फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन. सो इसके अंदर हम जनरल एंट्री विथ
टाइप्स ऑफ अकाउंट पास करेंगे. ओके, नाउ मूव फॉरवर्ड टू द सॉल्यूशन. First heading, in the book of Narendra General with classification of accounts. Number 1, date. Second column, particular. Then types of account, LF called ledger value. Next, debit amount, and then credit amount. Number 1, on date side, first we write an year 2019, then month April. After writing this, we will solve the transaction through date wise. Number 1, April 1. What is the transaction? Narendra commenced business with cash rupees 80,000. Right? Cash comes in a form of capital. So we write cash account debit to capital account. Narration, being started business with cash. हमने कैश में बिजनेस स्टार्ट किया. कैश इज आर असेट्स. सो टाइप्स ऑफ अकाउंट में कैश कौन सा अकाउंट है? कैश रिप्रेजेंट द रियल अकाउंट एंड कैपिटल रिप्रेजेंट द पर्सनल अकाउंट. वाई? बिकॉज इट्स टारगेट टू द ओनर्स ओन प्रॉपर्टी और ओनर्स ओन इन्वेस्टमेंट. डेबिट अमाउंट 80,000, क्रेडिट अमाउंट 80,000. थर्ड, purchase good from Kiran, rupees 40,000 on credit. Okay, so purchase account debit to Kiran account. Purchase is an expenses, so expenses represent nominal account. Kiran is a natural human being and natural human being represent the personal account. Narration, being purchase good from Kiran on credit. Debit amount 40,000, credit amount 40,000. Next 5, paid rent rupees 2,000. अब हम क्या कर रहे हैं? रेंट पे करें 2,000 रुपीज. सो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. रेंट इज एन एक्सपेंसेस, राइट? सो रेंट रिप्रेजेंट द नॉमिनल अकाउंट. कैश इज आर असेट्स, सो कैश रिप्रेजेंट द रियल अकाउंट. Narration, being rent paid. Debit amount 2,000, credit amount 2,000. Next, 5th, sold goods to Mr. Vikas, rupees 5,500 on credit. अब हम क्या कर रहे हैं? विकास को गुड्स बेच रहे हैं 5,500 क्रेडिट में. Who is the receiver? विकास. Okay, so what is the entry? Vikas account debit, as Vikas is the receiver, to sales account. Sales means हम goods बेच रहे हैं. Okay, so Vikas is a natural human being, represent the personal account. Sale is our profit, it's our income for the company, and this represent the nominal account. Narration, being goods sold to Vikas on credit. Debit amount 55,000, credit amount 55,000. Next 15, purchase furniture of rupees 30,000 at 18% GST. हमने क्या किया? 13,000 का फर्नीचर परचेज किए जिसपे 18%, दैट मीन्स 5,400 हम GST पे कर रहे हैं. फर्स्ट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, एज फर्नीचर इज एन असेट एंड असेट रिप्रेजेंट द रियल अकाउंट. नेक्स्ट, input CGST account debit. This GST is our expenses and expenses represent nominal account. Input SGST account debit, again it's an expenses and expenses represent nominal account to cash account. Cash is our assets and cash represent the real account. Listen students, listen again, what is the entry? Furniture account debit, input CGST account debit, input SGST account debit to cash account. Narration, being furniture purchase
at a rate 18% GST. On debit side amount 30,000, 2,700 and 2,700. On credit side amount 35,400. Next, received a bearer check of rupees 25,000 from Mr. विकास. विकास से हमें 25,000 रुपीज़ का एक bearer check मिला. Okay, bearer check called as a hard cash and cash represent a real account. Vikas is a natural human being and this represent a personal account. So what is the entry? Cash account debit to Vikas account being received a bearer check from Mr. Vikas. Debit amount 25,000, credit amount 25,000. Now 21, paid to Kiran by check of Dena Bank rupees 20,000. किरण को हम चेक पे कर रहे हैं देना बैंक से. किरण is a natural human being and this represent a personal account. Dena Bank is an artificial human being and this also represent a personal account. So what is the entry? Kiran's account debit to Dena Bank account being paid to Kiran by check. Debit side 20,000, credit side 20,000. Last, paid salary of rupees 5,000. Salary पे कर रहे हैं. Okay, salary is our expenses and expenses represent a nominal account and we pay salary in the form of cash. Cash is our assets and assets represent a real account. So what is the entry? Salary account debit to cash account being salary paid. Debit amount 5,000, credit amount 5,000. Okay, after completion of all the transaction we do a total and the final total is 2,62,400. Same on credit side 2,62,400. Listen students, यहाँ पे debit amount and credit amount both are same, दोनों same ही आएगा. Okay, so inshallah in next lecture we move forward to the next solution. Thank you. Assalamu alaikum.